Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel, and today in this video I'll be talking about how to make proposals for GSoC. And in this video I'll be taking my proposal which I applied during 2021 at TensorFlow, and also which got selected for GSoC 2021. So I'll be breaking down this proposal in front of you and I'll be also discussing some few stuffs which can make this proposal even good and more precise and more concise. So before making the proposal, the thing you should keep in mind that your proposal should be neat, as well as your proposal should be precise, and it should be presented in such a way that it should be appealing for the reader to actually go through your proposal. So let's go through one by one. And also before starting out, I want to make sure that want to let you know that each organization has different proposal format, but the main thing remains the same. Some of the things goes here and there, and rest of the things are pretty much same, so you can get an idea. And also I'll be sharing you a good resource from where you can actually visit and also can have look into some of the proposals which were being submitted by the GSoC students in the year of 2021 as well as 2020. So let's get started. So here you can see, so TensorFlow has many teams. So I was applying for TensorFlow Lite, so I have mentioned that I am applying for TensorFlow Lite, and then I have just mentioned the project title, which is generating TensorFlow Lite examples for Android, based on the application is based on NLP. So I've mentioned the title, and then I've just written the proposal for GSoC 2021. And then after the heading and the subheading, I jump down into personal details. In personal details, you can mention name, then you can mention IRC nickname for TensorFlow. And for few of the organizations, I've seen that they don't talk in the IRC channel, so you can remove it. And if your organization is like you are having conversation with a mentor in IRC channel or Slack channel, you can mention your Slack ID or your IRC nickname here. And then you can give away your telephone number, and then your email, then your GitHub ID, and then the country of residence, because of the what to say, like the clock timing, it will be helping the mentor to understand that what is your timing and all of the stuff. And time zone will also help in that. And then the language, the preferred language, mine is obviously English, and majority of the people will write English. And then I'll be writing the project proposal. So in the project proposal, you should give a project title, which you can see that I have given generate TensorFlow Lite example for NLP, and then some little bit of abstract regarding the project, that what are you gonna do and what is the idea. And mind that it will be in your GSoC project page after you successfully completed your project. So before writing it, keep in mind that what you are writing, and make sure you are writing it in proper format and everything is proper. So now let's jump into the background. So now in the background part, I have written about myself, that what am I and what I have done, where am I studying, as well as where am I working as a part-time and all of the stuff. As well as I've also written that I have taken sessions or talks at various places about deep learning with TensorFlow and TensorFlow Lite and all of the stuff. Also I've written my blog links, like attached my blog links here, so that the mentor can see, and he can see that what are the things, what are the activities also I've done apart from the coding aspect. So here are the things. Then I wrote down my task into bullet points, that what will I do. And here are the 4 tasks which you can see. I've written down the bullet points. So be clear about it, that what are the tasks you will be going to do. And also try to write everything in bullet points, so that it will be very precise and very concise. Try to use keywords, so that, and also try to use as much as links you can attach to your sentences, so that it can be easy for the maintainers to actually go and check it out. So after that, after writing the task, you can see, so I'll be working on that app. So for that, I have just attached a
diagram, flowchart diagram. You can also like attach a flowchart diagram according to your project, that what is your project, and the flowchart diagram related to it. It will help the maintainer to know that okay, you understood the project and you made some efforts to show it in your proposal. So after that, you have written description. I have written description for 3 apps which I have been working on, and then I attach screenshots of the app properly, and then again the flow, that how it is working. I just make sure to the maintainer that yeah, I know the project, and then the screenshots, and then the thing. And after that, after attaching the thumbnails, the photos as well as the flow, workflow, and all the stuff, you can mention the timeline, that what, and this is very important because you need to go through it, and the mentor will be seeing this timeline and will be judge you according to that. So make sure your timeline is proper, and make sure you are keeping weekly timelines, or you can follow whatever the way you want, like in 2 weeks, in 1 week. I've put that thing weekly, and I've mentioned all of the things. And yeah, try to do it bullet points, because bullet points से क्या होता है कि बहुत easily आप navigate कर सकते हो, या बहुत easily आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है. So आपको बहुत help करेगा अगर आप bullet points में लिख रहे हो तो. ठीक है, कीप दैट इन माइंड. एंड एक एक डेट के साथ आपको लिखना है, एक एक लिंक अटैच करना है, ताकि आपको पता चले कि हाँ मतलब कौन सा क्या है. आपको भी इजी लगेगा, एंड आपके मेंटर को भी पता चलेगा कि ओके दिस इज द थिंग, ये वाला ऐप है, ओके कूल. तो ऐसे करके आपको पूरा पता चल जाएगा. देन आप पूरा एकदम लिखिए, देन फाइनल इवैल्यूएशन लिखिए कि कितना तक है. देन आई हैव रिटन द टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, की कैसे मतलब मैं कमिट करूँगा, कब कमिट करूँगा, कब पुल रिक्वेस्ट मैं क्रिएट करूँगा, एंड ऑल द स्टफ, कैसे मैं मतलब चीज़ों को करूँगा, लाइक मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूँगा ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द ऐप इन द पुल रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब, एंड ये सभी करूँगा. देन आफ्टर टेस्टिंग एंड द वेरिफिकेशन पार्ट, मैंने लिखा है कि प्रीवियस कंट्रीब्यूशन टू ओपन सोर्स. सो मैंने क्या क्या प्रीवियस कंट्रीब्यूशन किए हैं, मैंने सब लिखा है इधर. सो यू कैन सी इट आउट. एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑब्वियसली, मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूँ कि बुलेट पॉइंट्स पे कीजिए, एज वेल एज लिंक अटैच कीजिए, ताकि पीआर का लिंक देखिए, 425 पीआर का लिंक जाएगा. मतलब आप मतलब देख सकते हो, कोई भी अगर जाके देखेगा कि हाँ मर्ज्ड है, सो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक अच्छा लगेगा दिखने में. सो इट विल हेल्प यू गाइस, राइट. तो आप ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने ऐसे करके सारे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जितने भी किए थे कर दिए. एंड मेक श्योर कि आप बहुत सभी चीज़ डालो जितना आप डाल सकते हो, लाइक रेलिवेंट चीज़ें, ताकि मतलब पता चले कि हाँ आप मतलब केपेबल हो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए. एंड डोंट फियर फ्रॉम पुटिंग एनीथिंग आउट इन द प्रपोजल. जस्ट रेलिवेंट होना चाहिए. इरेलीवेंट चीज़ें मत डालो, रेलिवेंट चीज़ें डालो, एंड जितना चाहे डाल सकते हो. एंड यही बात है. देन एक सेक्शन था कि प्रायर एक्सपीरियंस विद मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के साथ मेरा प्रायर एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैंने जो था मैंने वो सब लिखा कि मैं जहाँ काम किया था, जहाँ वो किया था, ये ऑल ऑफ द स्टफ, एज वेल एज द कोर्सेज विच आई हैव टेकन फ्रॉम द प्लेसेस. एंड उसके साथ साथ मैंने अपने सर्टिफिकेट का लिंक भी मतलब अटैच कर दिया ताकि ऑथेंटिक लगे वो चीज़. एंड देन एक चीज़ था कि मोस्ट एक्साइटिंग टेंसरफ्लो प्रोडक्ट क्या लगा था, तो मैंने अपने हिसाब से लिखा था कि क्या था. एंड ऑल्सो मेरे को लिखा गया था कि आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हो, तो मैंने ये भी लिखा था. सो दिस आर थिंग्स विच इज़ देयर. मतलब एक टेंसरफ्लो के उसमें लिखा हुआ था कि आप ये सब प्रपोजल में ऐड कर सकते हो, तो मैंने ऐड किया था. एंड देन एरिया ऑफ फोकस मैंने लिखा था कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एंड ऑल द स्टफ, मेरा फोकस क्या है. एंड लास्टली द सोशल लिंक्स. सो बेसिकली दिस इज़ द प्रपोजल. एंड ये बनाने में लिटरली मतलब एक अच्छा प्रपोजल बनाने में बहुत टाइम लगता है, अगर आप बहुत अच्छा खासा टाइम दे जा रहे हो, बिकॉज फ्लो चार्ट्स ऐड करोगे, फ्लो चार्ट्स में टाइम जाएगा. देन स्क्रीनशॉट करके आप सही से फॉर्मेट करोगे तो टाइम जाएगा. सो प्लीज़ मतलब आप लास्ट डे के लिए मत रखिए वही वाली चीज़, आप पहले से कीजिए, तो आपका एक अच्छा सा प्रपोजल रेडी हो जाएगा. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप कहाँ पे आप प्रपोजल के आर्काइव एंड ऑल सब देख सकते हो, तो वो है कि ये वाला एक हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था, गूगल समर ऑफ कोड आर्काइव, जहाँ पे आप जाके प्रपोजल आर्काइव एंड ऑल सब चेक कर सकते हो ईयरली. जैसे 2021 में सिर्फ एक ही है, तो आप उसको जाके देख सकते हो. प्रोसेसिंग फाउंडेशन का क्या प्रपोजल
लाइक स्टूडेंट ने सबमिट किया था। देन 2021 में लाइक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सारे प्रपोजल मेंशन्ड है, तो आप जाके देख सकते हो। लाइक टेंसरफ्लो में मेरा वाला प्रपोजल होगा, देन सुनीत का होगा, तो आप जाके ऐसे देख सकते हो। PDF है, आपको बस जाके थोड़ा खोजना पड़ेगा एंड यू विल गेट इट। तो आपको ऐसे करके सारे मिल जाएंगे, राइट? सो दिस इज द थिंग एंड या सो दिस मच फॉर द वीडियो एंड यही तक था। एंड सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या समथिंग लाइक दैट, यू कैन कमेंट डाउन इन द chat box, or sorry, in the description, and you can reach me out at the social media, and also you can join the telegram group. I'll be giving the link in the description so that you can ask questions there, and मैं also वहाँ पे like updates push करता रहूँगा like चीज़ों के बारे में जो मुझे पता है, so आप उसको follow कर सकते हो। So till then, bye bye, take care.